हे ऑल वेलकम बैक अगेन। सो लास्ट वीडियो में हमने सर्विस कैटलॉग के फील्ड्स बनाए थे, वेरिएबल्स क्रिएट किए थे और रिक्वेस्टेड टाइप को मैंडेटरी किया था। सो वी आर वर्किंग ऑन द पार्ट टू मेक द रिक्वेस्टेड फॉर ऑटो पॉपुलेटेड। सो व्हेन वी राइट द ऑनलोड क्लाइंट स्क्रिप्ट, सो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोग का जो वेरिएबल है ये सिस आईडी आ रहा है। सिस आईडी बिकॉज जो हमारा यूज़र फॉर्म पे जो यूज़र आईडी होता है वो रेफरेंस वैल्यू होता है, दैट इज द रीज़न। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको सिस आईडी से मैच कराकर यूज़र का नेम लेंगे। ठीक है, मैं आपको यूज़र फॉर्म दिखा देती हूँ। यूज़र फॉर्म सिस अंडरस्कोर यूज़र डॉट लिस्ट ओपन करेंगे। हमें सिस आईडी से मैच कराकर उसका नेम चाहिए। ओके, सो हाउ वी विल डू दैट, we will go here. Okay, we will do the where gr new glide record. So we are making the glide record on the sys underscore user table. Okay, uh, we'll make the glide record here, and now what we will do, gr dot add query, sorry, add query, और यहाँ पर हम लोग क्या मैच करा रहे हैं, sys underscore id को मैच करा रहे हैं हम यूज़र से, बिकॉज हमारा यूज़र में क्या आ रहा है, सिस आईडी आ रही है। ठीक है, ओके, gr डॉट क्वेरी इफ gr डॉट नेक्स्ट, अगर हमारे ग्लाइड रिकॉर्ड को कोई भी ऐसा मिलता है, सिस आईडी मैच होती है, देन क्या होगा, हम एक वेरिएबल लेंगे nm। ओके, उसमें हमारा gr डॉट नेम ऐड कर देंगे। ठीक है, gr जो नेम है हमारा, दिस इज द नेम। ओके, ये हमारा आ जाएगा एनएम में। सो हम यहाँ पे पॉपुलेट करा रहे हैं, रिक्वेस्टेड फॉर्म में हम सेट कर रहे हैं एनएम वैल्यू। नाउ जस्ट सेव इट एंड लेट्स सी व्हाट इज अपीयरिंग हियर। हमारा क्लाइंट स्क्रिप्ट काम कर रहा है या नहीं? यस, नाउ इट इज वर्किंग। नाउ रिक्वेस्टेड फॉर्म में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। यू कैन सी माई प्रोफाइल, here is a system administrator, so it is system administrator here. Now अब हमें क्या करना है, when I select the split value then only split value will appear here, otherwise ये दोनों वैल्यूज हिडन होनी चाहिए मेरी। ठीक है, ये दोनों फील्ड्स मेरी हिडन होने चाहिए। इसके लिए मेरे को क्या करना है, UI पॉलिसी लगानी है कि when I select the request type split value then only split value will appear. So okay, क्लाइंट स्क्रिप्ट का काम अभी हो गया है। सो अभी हम लोग जाएंगे वापस कैटलॉग आइटम पे। ओके, ओके, इट्स लोडिंग। सो वापस से कैटलॉग आइटम को ओपन करेंगे और नाउ वी विल यूज़ द यूआई पॉलिसी। यूआई पॉलिसी का काम यही होता है कि भाई आपको कोई फील्ड हाइड करनी है या फिर जब कुछ सेलेक्ट करो तो दूसरी फील्ड अपीयर हो। सो वी कैन डू इट थ्रू द यूआई पॉलिसीज। Okay, when you scroll down, where are the UI policies? When you scroll down, here is a tab catalog UI policies. Just click on the new. Okay, so now you will see here the short description. You can write what you want. Um, make field split value visible. Okay, I put the short description this. एंड क्या कंडीशन होगी, कब मेरा स्प्लिट वैल्यू विजिबल होना चाहिए, जब रिक्वेस्ट टाइप, ओके इट्स अ बिट स्लो, जब रिक्वेस्ट टाइप स्प्लिट वैल्यू होगी देन ओनली स्प्लिट वैल्यू विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर आप इसको सेव करोगे देन it will appear UI policy action, means whenever my condition gets true, like whenever the request type is the split value, then what will happen,
that part will cover in the UI policy action. If my condition is true, then what this policy will do? Then this policy will make the split value mandatory and visible. ओके, whenever my condition is true, तो क्या करेगा, जब भी रिक्वेस्ट टाइप स्प्लिट वैल्यू होगी, सो वेरिएबल स्प्लिट वैल्यू मैंडेटरी होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा हो गया स्प्लिट वैल्यू का कैटलॉग पॉलिसी एक्शन। अब मुझे सेम चाहिए फ्रीक्वेंसी वैल्यू के लिए। ठीक है, सो दोबारा हम लोग कैटलॉग खोलेंगे। अब हम एक और यूआई पॉलिसी तैयार करेंगे अपना। विल क्रिएट वन मोर यूआई पॉलिसी फॉर द फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ठीक, सी मेरा फ्रीक्वेंसी में स्प्लिट वैल्यू विजिबल आ रहा है। ठीक है, अभी एक और हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यूआई पॉलिसी क्रिएट करेंगे, सॉरी। सो इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेरा क्या होगा? इट्स अ बिट स्लो टुडे। मेक फ्रीक्वेंसी वैल्यू विजिबल। ओके, और कंडीशन मेरा क्या होगा? रिक्वेस्ट टाइप इज फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ठीक है, just save it and then add the UI policy action. When we save it, so UI policy action part will get appear here. So just create one action. What action we want? We want that frequency value, okay, will get mandatory एंड विजिबल। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है? सपोज मेरे बहुत सारे एक्शन है कि that I will cover in the next part, okay? In the next both, when the request type is both, then what will do? Then it will show the two values, split value and frequency value. So उसमें हम लोग ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे कि ऊपर कौन सा वैल्यू आना चाहिए, नीचे कौन सा वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, सो अभी क्या है, दोबारा मैं कैटलॉग आइटम ओपन करूंगी। So again we'll scroll down and go to the catalog UI policies. See, okay, now I'll click on the new again. Okay, so अभी मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है कि भाई मेक स्प्लिट एंड फ्रीक्वेंसी वैल्यू विजिबल, दोनों मेरी वैल्यूज विजिबल होने चाहिए। कंडीशन क्या रहेगी मेरी? रिक्वेस्ट टाइप is both. Okay, so now just save it and now we will add two UI policy actions. One is the split value and other one is the frequency value. So just click on the new. So पहले आना चाहिए हमारा split value, इसका ऑर्डर रहेगा 100, mandatory and visible. Okay, and just save it. Yes, okay, so इस ऑर्डर पे स्प्लिट वैल्यू ऑलरेडी है। ओके, हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे 300, क्योंकि 100 पर ऑलरेडी हमारा एक यूआई पॉलिसी स्प्लिट वैल्यू का रन कर रहा है। ओके, नाउ go back. Okay, now I'll add okay, I'll show you from here only. We'll create one more UI policy action. Under that UI policy we created to make both fields visible. Scroll down. Okay, so under UI policies, make both fields visible. Okay, now what we will do, we will add one more. Okay, split value we have already added. Now we will add the frequency value. Variable name is
frequency value, and we will put here 400. It should be mandatory also and visible also. Just save it. Okay, now what we will do, we will check that it is working or not. Just reload the form. Now see, both fields get hidden. हमारे सिर्फ दो field show हो रही है, requested for and request type. When I select the split value, then split value field will be appear and it's mandatory. When I select the frequency value, then frequency value field will get appear and it also mandatory. And when I select the both, then both fields will get appear. So in this way we can use the UI policies. Okay, so next part is a workflow, where we can add the workflow, how we can do the RITM part. So when we open a catalog, okay, when we scroll down, here is a process engine here. Okay, here is a process engine part, here is a flow and workflow. We can do the workflow and flow both. Work, you can say flow designer is a updated part of the workflow is outdated nowadays. You can do the flow designer without coding. Okay, so we have to create one workflow and add it here through the search bar. Sorry, flow designer. So how to add the flow designer? See, process automation under, click on the flow designer. It's been loading. It's a bit slow today, I guess. We should cover this part in the next video because it's a bit slow and I don't want to show flow designer in a slow network. So we'll continue in the next video, I guess.